में डिस्कस करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सपोज दैट बच्चे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है एंड वी विल nominate it as A, B, C and D. This is only figure is given. If you are in a class 8, definitely you have to learn it in a class 9. So if you will pay more attention और अभी आप इसको सीख लेते हैं तो क्लास 9 में आपके लिए एकदम बना बनाया पका पकाया सब कुछ रहेगा। ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल में इसकी डिटेलिंग करनी है, हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं, सभी टाइप्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लोअर क्लास के लिए और बेसिक नॉलेज के लिए अभी फिलहाल केवल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेके आए हैं। वन बाय वन पूरा डिटेल करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। तो एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से देखते हैं बेटा, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना होता है, गिवन दैट। व्हाट इज गिवन? तो हमारे पास गिवन में केवल ये है बेटा, व्हाट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी हमारे पास क्या दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बेटा, इसको भी लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360। बच्चे अकॉर्डिंग टू फिगर अभी तक हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से विदाउट गिविंग द रीजन वी कैन से दैट ABCD is equals to 360. So for proving this what we will do, we will make a construction. क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन B to D। हम B को क्या कर देंगे, D से ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा जो मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, when opposite vertices of a quadrilateral or four-sided closed figure are joined, they form a diagonal. And how many diagonal of a quadrilateral? First one is BD and second one is AC. It means four-sided closed figure में केवल और केवल कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं बच्चे। ठीक है। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, B को D से ज्वाइन कर लिया। Now what we will do, we will nominate it as angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4। हम इसको क्या कर देंगे बेटा, नॉमिनेट कर देंगे। Now we will see the proof. This is the proper way to show that ASP of quadrilateral. Now in a proof what we will write? We will write in a triangle ABD. In a triangle ABD. What we will write beta? We will write angle A plus angle 1 plus angle 4 is equals to 180 degree. Equation number first. Region क्या लेंगे बेटा, region देंगे ASP of triangle। क्या ASP of triangle? As we know that sum of all interior angle of a triangle gives 180 degree. That's why we have given here ASP of triangle. Clear bachche? Now in a second portion we will write in a triangle what, BCD. In a triangle BCD what we have, angle 2 plus angle 3 plus angle C is equals to what बच्चे, 180 degree, and this will be equation second. Now this one is ASP of triangle. In a both equation we have a same region. Now we have a two equation first and equation second. Now the last step is by adding, focus here, the important step, by adding equation first and second. Now what we will do bachche, we will add the equation first and second. How we will add? We will add left hand side in a left hand side and right hand side in a right hand side. So we will write here, what we will write, angle A plus angle 1 plus angle 4
angle 1 we copy as, because in a to prove we have angle 1, we will write here as it is angle 1 plus. But for B, we know that when we will add angle 1 as well as angle 2, we get angle B. Angle 1 and angle 2. We will write angle B plus angle C. We have angle C plus. When we will add angle 4 and angle 3. Angle 4 and angle 3. What we get? Complete angle D. So, in the right hand side, 180 plus 180 gives 360. This is our final step for proving ASP of quadrilateral is 360 degree. क्लियर है? सभी को समझ में आया बेटा? चलिए, तो अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको कराने वाला हूं. That is the sum of exterior angle is always 360 degree. You prove that sum of all exterior angle of a quadrilateral is 360 degree. For doing so, first of all, we will make a quadrilateral. Now, you have a new term. What is the new term? Prove that sum of exterior angle. ये आपको नया सीखने का वर्ड मिला है. कुछ नया सीखने के लिए आपको मिला exterior angle. When exterior angle form, when we will extend the side, if I will extend AB such as I will take B, this one is exterior. When we will extend BC, this will be exterior as cubes. When we will extend CD, I will get as angle R. When we extend DA, we will get as angle S. Clear बेटा? Exterior angle का concept clear हुआ? When we extend the side of any shape, we get the exterior angle. ठीक है? Now, look here बेटा. We have given solution. हम proof की तरफ चलेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो first of all, we have to write given that. क्या लिखना है बेटा? Given that. Now, what is given? A, B, C, D is a quadrilateral. Is a quadrilateral. Clear? Now, what we have to prove? We have to prove that. क्या proof करना है बेटा? हमें proof करना है angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equals to what? 360 degree. यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा? हमारे पास गिवन में क्या था? ABCD is a quadrilateral. हमें प्रूफ क्या करना है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. तो हमने लिख लिया एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S. हमें क्या प्रूफ करना है? 360 डिग्री. नाउ come on a point that is proof. हमें क्या करना है बेटा? प्रूफ. प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल if I will take it as S, this one is taken as A and this one is taken as B, this one is taken as C and this one is taken as D. What I will write? I will write angle A plus angle S is equals to 180 degree. Region will be बच्चे, region will be equation first. Region will be linear pair angle. एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं अपना उनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. सेकंड थिंग एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना बच्चे? 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर सेकंड. यहां पे भी रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर. थर्ड वन इज एंगल C प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर थर्ड. एंड द लास्ट वन इज angle R plus angle D is equals to 180 degree. Equation number 4. सब में रीजन क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा. क्या रीजन रहेगा? लीनियर पेयर. बिकॉज़ ऑफ देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, लाइन को एक्सटेंड किया है. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, लाइन को एक्सटेंड किया है. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, हमने लाइन को एक्सटेंड किया और सेम हियर. They will form linear. Is that clear? Now we have a four equation. So what we will write? We will write by adding equation first plus second plus third and fourth. All four equation will be added. If I will add first equation angle A plus angle S, as I told you in
hand side in a right hand side. तो बेटा यहाँ से क्या है एंगल A प्लस एंगल S, एंगल A प्लस एंगल S प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल D is equals to 180 plus 180 plus 180 plus 180. कितने टाइम ऐड किया बेटा हमने 4 टाइम ऐड किया. ठीक है. नाउ वी सिंपलीफाई. We will write angle A plus angle B plus angle C plus angle D together and mark the sign plus, and here we will write angle P plus angle Q plus angle R plus angle S and equals to 18 for the 70. 720. Clear? Now, the sum of all interior angles. Sum of all interior angles. हमने क्या प्रूव किया बेटा? 360. We will write here 360 plus angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equals to 720. Now, finally, we get as angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equals to what? Is equals to 720 minus 360. ठीक है बेटा. तो फाइनल आंसर विल बी एंगल P plus एंगल Q plus एंगल R plus एंगल S is equals to what? 360. तो हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा? हमने प्रूव कर दिया sum of all exterior angle of a quadrilateral is sum of all angle of quadrilateral is 360. नोट पे डाल के आप लोग लिख लीजिएगा. ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलीगन. पॉलीगन तो कोई भी पॉलीगन हो बेटा, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ पॉलीगन एंड ऑल द प्रॉपर्टी, बट ध्यान रखिएगा नोट में आपको लिखना क्या है. कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज बी 360. कितना होगा? 360 होगा. क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का भी ध्यान रखिए. Thank you so much.